whenever we are together, whenever we're meeting, whenever we're spending time with each other, we're always happy. I am somebody who does not like to go ये out. यहाँ भी मैच हो गया. हाँ, but when we meet, we make plans. चल मूवी चले, चल बाहर चले, चल यहाँ चले, चल वहाँ चले. उसको मैं ये बोलूँगा कि तू घर के अंदर फेंक नहीं था. Hey guys, this is Ankit Gupta. If you like this conversation, please like, subscribe, and share Shubhajit's channel. मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो गुड लुकिंग, टैलेंटेड, हैंडसम, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एडजेक्टिव्स आई कैन पुट, जो हंक है यहाँ पे, तीन चीज देखते: लोगों की आंखें, लोगों के हाथ और लोगों के पैर. मेरे आंखें कैसे, मेरे हाथ कैसे, मेरे पैर कैसे? पहले सबसे पहले ये बताइए मेरे को. आपकी आंखें आउट ऑफ बहुत 10 कितना दोगे मेरे को? आपकी आंखें बहुत शरारती हैं. शरारती, वो तो मैं हूँ बचपन से, वेरी नॉटी. आ, हाथ, आप सोच लो क्या क्या गुल खिलाए इन हाथों ने. नहीं, मैं नहीं सोचना चाहता. मैं नहीं सोचना चाहता. और पैर भी एकदम मस्त, मतलब गुड इनफ टू सिट विद अंकित गुप्ता एंड डू अ नाइस करक इंटरव्यू. यार ऐसे मत बोल. भाई मुझे बताओ, यू नो, नाउ व्हेन आई सी योर सक्सेस स्टोरीज, व्हेन आई हियर ऑल ऑफ दैट, यू नो, बॉम्बे आके घर ले रहे हो, एवरीथिंग बाय गॉड्स ग्रेस, टचवुड. एक टाइम पे मैंने सुना था, आई रेड समथिंग अबाउट यू, जहाँ पे आप ऑडिशंस नहीं जा पाते थे बिकॉज आपके पास पैसे नहीं होते थे, राइट? फ्रॉम दैट सिचुएशन कट टू नाउ, जिस शहर में आपने सबसे ज्यादा सपने देखे वहां पे खुद का घर बना रहे हो. इमोशंस, what is the emotions like? Because finances is just a byproduct of the hard work that you do, बट इमोशन क्या है, घर वालों का इमोशन क्या है? बिकॉज आपके साथ साथ जो सपने देखते हैं वो आपके घर वाले होते हैं, वो बताओ. Absolutely, absolutely. I think now, see, हम मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास फैमिली, there is something we never say or we never do. Like we hardly hug our parents and say, or parents hardly say that we're proud of you or you've done something good with your life. They don't say it, but you can see, फील कर सकते हो you वो can चीज. feel that when you meet them, when you talk to them, you can feel that. And I think now I feel that proud in my uh, mother's talks. उससे बड़ा गिफ्ट जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता. चाहे जितने पैसे कमा लो, जितना स्टार बन जाओ, मम्मी की आंखों में जो प्राइड है, बेस्ट गिफ्ट है वो, राइट? Absolutely. मुझे बताओ कि यू नो, इट्स बीन अ गुड फेज, ऑफ कोर्स काम कर रहे थे. नाउ दैट यू हैव अ बिट ऑफ ब्रेक टिल द टाइम यू रिज्यूम अगेन, इट्स अ ग्रेट टाइम टू वर्क ऑन योरसेल्फ, राइट? एंड एनीवे, वर्किंग ऑन योरसेल्फ इज अ ग्रेट वे, इट्स अ ट्रेंड राइट नाउ. वी लिव सो वी आर अ लिवर, दैट इज अ ग्रेट पॉपुलर मीम चल रहा है. सो आप भी लिवर हो राइट नाउ टिल द टाइम यू एक्चुअली बिकम दैट वर्कर अगेन ऑन सेट, दैट एक्टर अगेन ऑन सेट. तो राइट नाउ वो जो टाइम मिल रहा है, जो शायद दूसरे टाइम पे नहीं मिलता होगा बिकॉज ऑफ हेवी पैक्ड अप शेड्यूल, क्या अलग कर रहे हो टू वर्क ऑन योरसेल्फ? अलग अभी तक एक्चुअली अलग करने का कुछ ज़्यादा वक्त नहीं मिला, लेकिन अभी बॉम्बे वापस आया हूँ. घर ढूंढना, घर सेटअप करना, वो सब से अभी फ्री हूँ. नाउ आई हैव अगेन गेटिंग बैक टू माय रूटीन एंड माय हेल्थ रेजीम. वो सब करना अब शुरू किया है फाइनली आफ्टर 1.5 month. वो करूँगा. उसके बाद I will see what else I can do in that free time. I think डांस की बहुत ज़रूरत है. वो उस पे थोड़ा सा काम करूँगा. यू नो, जब आप काम करते हो किसी के साथ, वेरी रेयरली दैट हैपेंस कि वो ब्रोकोड वाला जो रिश्ता है वो किसी किसी लोगों के साथ बन जाता है. विद अभिषेक दैट इज द केस ऑफ कोर्स. एंड आई नो कि वट एवर एक्सटर्नल जजमेंट्स दैट, क्या होता है ना, मेरे भाइयों के लिए अगर मैं बोलूँ तो दुनिया कुछ भी बोले, मेरा एक पर्सनल बायस है, वो एक प्यार रहता है. विद अभिषेक राइट नाउ देयर इज ऑफ कोर्स अ सेक्शन जो उसको बहुत सारा जजमेंट कर रहा है फॉर वट एवर रीजंस दैट इज बी, बट वो जो ब्रो कोड है आपको और उसका, वो रहेगा इन दैट केस ऑलवेज. सो once it comes out from that big boss house, hopefully a trophy लेके, which I'm sure you will be hoping as well, उसके बाद जब उससे पहली बार मिलोगे, what will you tell him at that point of time? Because according to you as well, what you feel, it's a difficult phase right now for him, right? So वो जो पहला झप्पी दोगे उसको, उस टाइम उसको क्या बोलोगे? उसको मैं ये बोलूँगा कि तू घर के अंदर फेक नहीं था. So घर के अंदर फेक नहीं था, तू ओरिजिनल था. यू सेड दिस अ कपल ऑफ टाइम्स एज वेल कि उसके जो इमोशंस है,
ही इज वेरी एक्सप्रेसिव, समटाइम्स इज ओवरटली एक्सप्रेसिव, विच इज ऑल्सो ह्यूमन ट्रेड, हो सकता है. बट डू यू फील कि बिकॉज ऑफ हिम बीइंग ओवरटली एक्सप्रेसिव, कुछ लोग जो है घर के अंदर उसको, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट ईशा और सम अदर्स एज वेल, they misunderstand him, because it's a good question to ask you, because unlike them you have spent a lot time more with Abhishek, right? तो उस हिसाब से ये सवाल आपके लिए बनता है. ऑफ कोर्स होता है ये, और सिर्फ उसके केस में नहीं, ये मैंने काफ़ी लोगों के केस में देखा है. सी अभी ना क्या हो गया है, लोग यार बहुत जज करते हैं. नो मैटर हाउ यू आर, आई वॉज काम, आई वॉज क्वाइट, तो भी मुझे लोगों, Right. ऑफ कोर्स लोगों ने जज किया होगा. Abhishek is out there and very emotional, or whatever he says, whatever he has to say, or he takes stand for whatever things are happening in the house. उसके लिए लोग उसको जज कर रहे होंगे. हमारे हमारे सीज़न में भी और लोग थे जिनके लिए लोगों को जज किया जा रहा होगा. बट प्रॉब्लम क्या है ना, लोग जज करते हैं, but nobody tries to put themselves in their shoes. If you analyze situation, putting yourself there in that situation, then you will realize that anybody or everybody just tries to do the best they can do in that given situation. Particular situation, correct. So once you analyze the situation, putting yourself in the situation, then probably you will not judge. You know, again, because I was coming over here to do the shoot with you, मैं ऐसे अंकित गुप्ता गूगल के आर्टिकल्स वगैरह मीडिया के आते हैं, एक हेडलाइन था वहाँ पे एक पब्लिकेशन का, इट वाज समथिंग लाइक कि अभिषेक के साथ तो ऑफ कोर्स इट्स अ गुड ब्रो कोड ब्रदरहुड वाला सिनेरियो, ईशा के साथ जो है उतना बॉन्डिंग, एंड इट्स फाइन बिकॉज इट्स नॉट दैट कि सबके साथ यू हैव टू बी इक्वली गुड फ्रेंड्स, बट यू नो यू सेड दैट समथिंग लाइक ईशा के साथ आई नेवर रियली हैड दैट थिंग, बट एट दैट टाइम आप लोगों ने आपने अभिषेक एंड ईशा दोनों को देखा था, तो कभी कभी क्या होता है कि इवन इफ आई डोंट गेट अलोंग वेरी वेल विद दैट पर्सन, जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज डेटिंग माय फ्रेंड और ब्रदर व्हाटएवर, थोड़ा बहुत चिल वगैरह रखना पड़ता है. सो वाज योर इक्वेशन विद ईशा ओनली लिमिटेड बिकॉज ऑफ अभिषेक? Initially not. Initially we used to talk थोड़ा बहुत, but then यार अब see, there's a lot of age difference. I mean, I'm almost 10 years elder to her, and then 10-11 साल में ना वो जनरेशन डिफरेंस आ जाता है, वो जनरेशन गैप आ जाता है. एंड देन जो आजकल की जनरेशन जिस तरह से सोचती है या जिस तरह से फंक्शन करती है, मे बी दैट्स नॉट माई स्टाइल, मे बी दैट इज द रीजन आई कुड नॉट कनेक्ट विद हर सो मच. एंड मेरे साथ ऐसा नहीं है कि बिकॉज वो अभिषेक के साथ है तो मुझे हैंग आउट करना पड़ेगा. I don't work that way. I mean, if even both of them are there and I only connect with one of them, I will talk to one of them. Which is fine as well, because like I said in the very beginning, it's not mandatory कि हर एक इंसान के साथ आपको बॉन्ड करना है, वो नहीं होता. ऑर्गेनिकली जहाँ होता है वो होता है. भाई मुझे प्लीज़ आप बताओ कि आई स्पोक अबाउट योर ड्रीम्स, यू हैड बिग ड्रीम्स, बाहर से आए हो. आई कैन ऑल्सो रिलेट इन मैनी वेज बिकॉज आई हैव ऑल्सो नॉट ओरिजिनली फ्रॉम मुंबई. सो जो बाहर से आते हैं, एक सपने देख के आते हैं, उनका अलग अलग सपना होता है, ख्वाब होता है, एंड वो पैशन होता है टू अचीव दैट थिंग, राइट? माशाल्लाह, बाय गॉड्स ग्रेस यू आर ऑलरेडी एन रूट दैट जर्नी, एंड आगे जाके अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स विल होपफुली हैपन, टच वुड. बट ये जो फेज है अभी ब्रेक का ना, इट्स अ वेरी डाइसी सिचुएशन फॉर एवरीवन, बिकॉज suddenly you're like, वो जो पैक स्केड्यूल था वो बंद हो गया. नाउ यू विल बी लाइक दैट हंटर गोइंग आउट देयर, काम ढूंढोगे, काम मिलेगा भी. बट कभी कभी ये जो फेज है, बिफोर यू स्टार्ट डूइंग दैट और बिफोर यू एक्चुअली क्रैक दैट थिंग, व्हाट इज योर साइकी राइट नाउ? सेल्फ डाउट तो आई एम श्योर नहीं होगा, बट हैव यू गिवन योरसेल्फ एनी टाइम कि यार से एक महीना देख लो, एक महीना में देखूंगा, कुछ ना कुछ नहीं आया तो व्हाटएवर that comes, I'll take it. ऐसा कुछ है? Have you set any timelines for yourself? I never set any kind of time limit because plan भी तो कोई है नहीं. बिल्कुल. जो करना है यही करना है. एंड नाउ ऐसी डू और डाई वाली सिचुएशन भी नहीं है कि जो भी आ जाएगा वही कर लूंगा. करेक्ट. बाय गॉड ग्रेस नाउ आई एम इन दैट सिचुएशन वेयर आई कैन डू व्हाट आई फील लाइक डूइंग. करेक्ट. सो ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब मिलेगा अच्छा मिलेगा देन ओनली.
तो बेसिकली अगर थोड़ा सा रुकना भी पड़े तो रुक जाना, जो सोशल मीडिया में एकदम अच्छे अच्छे फोटोज वीडियोस तो डाल रहे हैं, तब तक उसी से काम चला लो. लेट हिम गेट द बेस्ट दैट ही वांट्स एंड ही वांट्स टू डू मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तब जाके उनको ऑन स्क्रीन देखोगे. यू नो, आई वांट टू नो समथिंग. व्हाट आई रियली लाइक, मैं इधर था एंड आई वाज हियरिंग अबाउट समथिंग कि आपको प्रियंका के बारे में पूछा गया. व्हाट आई रियली लव अबाउट द फैक्ट कि आपका जो भी पर्सनल बॉन्डिंग है, यू डोंट रियली लाइक टू गिव टैग्स टू इट, व्हिच इज फाइन. It's upon those two individuals how they look at that equation जो भी है. Because you guys are close friends, whatever जो भी है, it's also about emotionally lifting yourselves up, right? कि कभी कभी उसका बुरा दिन हो सकता है. She might have expectations from you, and it's also the other way around as well. So how do you emotionally lift each other up when, say, you know, one of you is having a bad day? एक्चुअली हमें एक दूसरे को ना लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती. whenever we are together, whenever we are meeting, whenever we are spending time with each other, we are always happy. We are always happy. Like, she is somebody who does not like to go out. I am somebody who does not like to go out. ये यहाँ पे मैच हो गया. हाँ, but when we meet, we make plans. चल मूवी चले, चल बाहर चले, चल यहाँ चले, चल वहाँ चले. We do that, and it comes naturally. So we don't have to work for it. That's the best thing. So कभी किसी को एक दूसरे को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. एंड वी बोथ आर लाइक, हमें कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है ना, 2-4-5 मिनट से ज्यादा कुछ चीज अफेक्ट नहीं करती. नहीं, बट से कभी कभी होता है ना कि लाइक यू गोइंग थ्रू अ रफ फेज इन व्हाटएवर वे, हो सकता है वो रफ फेज एक ही दिन का हो. यू गो टू योर फ्रेंड्स, यू गो टू योर फैमिली वगैरह एक्सेट्रा, राइट? तो उस टाइम पे अगर कोई एडवाइस आप दोनों में से कोई मांगे या दे, सो अगर दोनों में अगर मैं पूछूं हु इज दैट एडवाइस गिवर एंड हु इज दैट एडवाइस रिसीवर? We both are. Both We are both are givers givers and receivers. हाँ. We generally discuss our work. ये ऐसा है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, या ये नहीं करना चाहिए. So we tell our perspective. So what you are doing right now is professionally lifting each other up because you're guiding each other. That's great. No, we're not guiding each other. We just tell our perspective कि मेरे perspective से इसके pros ये हैं, इसके cons ये हैं. बाकी you decide what you want to do. We do not force or put anything on each other कि यार ये ऐसा, ये कर ले, ये तेरे लिए अच्छा होगा, या वो कर ले, वो तेरे लिए अच्छा. No, we say देख ये करेगा तो इसका ये benefit है और इसका ये cons है. So now you decide what do you want. So it's like that. And I think that's why it's working. Absolutely, absolutely. Touch wood, and वो जाके आगे work करते भी रहे. Last question before I let you go would be कि personal life by God's grace sorted, professional life also sorted, आगे जाके और sorted होता रहे. That is what I would always wish. That's my wish for anybody who, you know, works hard, creates his own journey. But कुछ personal targets भी होता है इंसान का कि यार you know, say by this year I want to achieve this. You know, by this year I want at least this to happen. Professionally अभी तो देखो mediums are opening up like anything. You see someone like a Bobby Deol in a 15-minute role in Animal without uttering a dialogue. He's killed it with that entry scene. So वो spectrum जो है, it's a lot wide right now, right? Does it make you happy as a performing artist? Of course. Now there's so many platforms, and it is so good for creators, for actors to show their craft. Like maybe tomorrow I feel like making something. Yeah. I have so many platforms. I can just now I can actually think of it. So it is a wonderful time. It is a great opportunity right now, and I hope that as OTT it should work. Now currently there are hardly any bigger OTT. Netflix, Amazon, Hotstar and Jio. I personally wish कि अभी और ऐसे 2-4 प्लेटफॉर्म्स आए वेयर या जो भी पुराने प्लेटफॉर्म्स है वो इतना ग्रो करें दैट आर्टिस्ट लाइक अस वी गेट चांस. वहाँ पे ट्रैफिक ना लगा रहे कि ये कब आएगा वो कब आएगा. बट भाई थैंक यू सो मच. आई विश जेन्युइनली वी हैड मोर टाइम, बट जितना भी टाइम मिला आई विश यू ऑल द बेस्ट. जितने भी सपने आप देख रहे हो सब पूरे हो, ऐसे ही ख्वाब पूरे करते रहो. लोगों को ख्वाब करने का वो जो क्षमता है वो भी उनको देते रहो. कीप गिविंग देम दैट पावर. ऑल द बेस्ट. Thank you so much. That's a wrap on the Sunny G Show. This is your host Shubhojit. I'll see you with another interesting episode very soon. Thank you. Take care. God bless. And thank you.